Respected CMD Tamanna Foundation, Bhubaneswar, Mrs. Smaranika Mahanti, Senior Teacher, Titlagarh Public School, Sarita Mahapatra, Seminar Coordinator Minati Panigrahi, dignitaries from far and wide, invitees, media person, and my dear students. On this auspicious occasion, I welcome all of you to this occasion. In today's occasion, let me say some lines about the women who have inspired masses every time, everywhere, and in every age since time immemorial. Friends, women can wish the world, open the world, mesmerize the world, affirm the world, and above all, neutralize the world. She flows like a river. She flows like a river and makes everyone inspired. So, in my book Jeevan Tattva, I have written, नदी की धारा तू तो होती, नदी की धारा तू तो होती, चुमके सबको तू यहाँ बहती, चुमके सबको तू यहाँ बहती, प्रीत की सागर तू धरती पर, प्रीत की सागर तू धरती पर, इसलिए मैं तुझे ढूंढता बार बार, इसीलिए मैं तुझे ढूंढता बार बार. Friends, a woman is an inspiration because she initiates every process of life through her noble attitude and hospitality. She is a service provider and potential behind the man. She exercises her intuition while rejuvenating someone and affirms the world with truthfulness. She is an institution and organizes all her departments with courage and ability. And above all, she reforms people around her with her nobility. Friends, she is bold, brave, confident, courageous, curious, willful, open, and has managerial ability with her noble and need-based qualities. Friends, now I invite my student Simran and Sabita to present the script prepared by this department in English and Hindi respectively. Let's join our hands together to make the women of our country empowered, because without them our civilization becomes stagnant. Let's receive energy from the women like Chandragupta Maurya in the present COVID-19 situation and fight against this Mahamari or epidemic. Thank you. Simran Nayak. A warm welcome to one and all present here. Good morning everyone. Respected chairpersons, Professor Kamakhi Prasad Das Sir, HOD History, Government College Koraput, Chief Managing Director, Tamanna Foundation, Bhubaneswar, Smaranika Mahanti Madam, Senior Teacher, Sarita Mahapatra Madam, Om Valley Educational Institution, Titlagarh, Seminar Coordinator, Minati Panigrahi Ma'am, my seniors and my dear friends. In today's webinar, I, Simran Naik, would like to present an article on Why is Women Source of Inspiration, prepared by our Departmental HOD, Professor Das Sir. From being the simplest of all to one of the strongest of all, from being the one taking care of households and children to the one taking care of the whole nation, women have always stood up and inspired everyone with their bravery, sacrifice, loyalty, and whatnot. Women are half of the society. We cannot have a revolution without women. We cannot have democracy without women. We cannot have equality without women. We can't have anything without women. Because they can wish others, they can open others, they can mesmerize others, they can affirm others, they can neutralize others by virtue of their divine quality, as our HOD says in his book Jeevan Tattva and A Rethought to Life.
So let's discuss what makes a woman an inspiration. To be an inspiring woman, one should be conscious and should have sincere effort with all her activity. She should be interactable, approachable, and must be situation oriented every time. She should be altruism in her heart and mind. An inspiring woman can handle all kind of negative situations of life while infusing everyone with positive spirit. Now, I would like to focus on the quality of a strong woman. A strong woman is clear about what she wants without being aggressive. She can move quickly and respond with physical strength. She applies her skills to the task at hand and never shies away from a more challenging request. She fights for what she believes in, no matter the cost. Now, let me discuss about some of the examples of women that inspire us by their act of kindness, courage, and determination. While talking about women, the first woman we all know is our mother. Here, I'm going to talk about the mother of the poor, Mother Teresa. Agnes Gonze Boiazieu is perhaps the greatest name ever. She is regarded in the Roman Catholic Church as Saint Teresa. She is known for being one of the most benevolent people in the world because of her work in elevating poor people and understanding their hardship better by living with them. She even received a Nobel Prize for Peace in 1979 for all the great deeds that she did. She took her pledges to turn into a nun in the year 1937 and thereafter she committed her life towards the improvement of poor people. At the time of her death, missionaries of charity members were strong at 4,000 members and counting, with 610 foundations in more than 100 countries. Rani Lakshmi Bai, the fearless pioneer, the Queen of Jhansi, Rani Lakshmi Bai, dressed as a cavalry leader, was badly wounded. Not wishing the British to capture her body, she told a hermit to burn it. After her death, a few local people cremated her body. She was called Shabili by her Peshwa. She was educated at home and was more independent in her childhood than others of her age. Her studies included shooting, horsemanship, fencing, and Malakhamba with her childhood friends Nana Sahib and Tatya Top. But this eternal soul never gives up on Jhansi. Kalpana Chawla. Kalpana Chawla, the first Indian born woman in space, was born in a conservative society. She broke several traditions to become the first Indian born woman astronaut in space. Unfortunately, her space shuttle disintegrated while landing back on Earth and she passed away. The story of her excellence and bravery is still remembered by everyone and inspires every woman in the world. She is a true inspiration for all the young girls to live up to their dreams. She died like a hero. She is still alive in all of our hearts. She is a role model for many young women in India and around the world. She belonged to a small town, a bag full of big dreams within it. She took a step and fought hard against various rules set by society to change her dreams into reality. Arunima Sinha, a sports person who is lesser known. Her bravery and determination have inspired everyone. She lost her leg in an accident and despite managed to climb Mount Everest. She lost her left leg completely. She had serious injuries. She heard the world talking negatively about her. At that moment, she decided to prove the whole world what she is. She converted her weakness to her strengths and kept improving one step towards success. In 2012, under the guidance of Bachindri Pal, she climbed Island Peak as training to the ascent of Mount Everest. She faced many terrible experiences on her journey to the top of the mountain. And in the year 2013, Sinha reached the top of the world and became first female amputee to climb Mount Everest. She is a true inspiration for determination and dedication to the goal. The Gulabi Gang, a group of awesome women who collectively call themselves the Gulabi Gang, has set an example of how women can join hands and fight for justice. Yes, we fight rapists with lathis. If we find the culprit, we thrash him black and blue so he dares not attempt to do wrong to any girl or a woman again. Boasts Sampat Devi Pal, the group's founder and head. Devi first discovered the power of stick in 1980s when she used it against a neighbor who abused his wife.
from fighting violence against women, preventing child marriages, arranging weddings a couple in love despite local resistance, to ensuring delivery of basic rights for the poorest of poor, the Gulabi Gang's vision is to protect the powerless from abuse and fight corruption. Mary Kom. Mary Kom, also called Magnificent Mary, is a 5-time world amateur boxing champion. She is the only woman boxer to have won a medal in the 6 World Championships, and she is also the first Indian woman boxer to win a gold medal in the Asian Games in 2014 and another gold in the 2018 Commonwealth Games. One of the strongest women in the world, Mary Kom is a true example of excellence. The title Magnificent Mary has given to her for a reason. Mary Kom is an inspiration for women all over the world. Mother of 3 sons, a twin and a son, she managed to look after her family as well as her sports life very well. Even her motherhood never hindered her against her passion for boxing. She was also awarded the Padma Vibhushan in 2020. Nirja Bhanot. मर जाऊंगी लेकिन भागूंगी नहीं. The courageous young flight attendant named Nirja Bhanot boarded Plan AM Flight 73 that would be hijacked on its way to the United States of America. When hijackers boarded her plane, this 23-year-old flight attendant gave her life to save the lives of hundreds. When the day ended, almost everyone survived the hijack thanks to Nirja's quick thinking and courage. The story of the young Indian flight attendant who laid down her life to save that of 359 others have been told to date. Priyanka Chopra Jonas. The second Miss World on the list, Priyanka Chopra is one of the biggest names in the world today. Priyanka Chopra Jonas is an Indian actress, singer and film producer. The winner of the Miss World 2000, Priyanka Chopra is one of India's highest paid and most popular entertainer. She has received numerous accolades including 2 National Film Awards and 5 Filmfare Awards. In 2016, the Government of India honoured her with the Padma Shri, and Time named her one of the 100 most influential people in the world, and in the next 2 years, Forbes listed her among the world's 100 most powerful women. In 2021, she published her Memoirs Unfinished, which reached the New York Times bestseller list. While there are several women who go on to perform well in their chosen fields outside their homes, there are many who sit at home and still own the world. Yes, I'm talking about every homemaker mother. The last but definitely not the least, every Indian mother is an achiever we just cannot leave out. Parenting can be a task, we know that, especially in today's day and age when we all have careers, homes and families to juggle. Moms are greatest teachers for life. Whether it is about cooking, tips to clean your stains or desi nuskas for treating your acne, she knows everything. And yes, apart from being the greatest teacher she already is, she is a perfect manager who is managing our intense life and helping us cope up with things around us. However, there is always something special about Indian moms that set her apart from the others. At the end of my topic, I just want to say that women are simple and strong, bold and beautiful, inspiring and independent, daring and determined, fantastic and focused, generous and gorgeous. It's not just about being a great personality, but a whole lot of handworks, passion, and comparison needed to be wise and potential young women of this era. So girls, flaunt your flaws and live your life on your own terms. At the end of the day, don't forget that you are a person. Don't forget that you are a mother, a wife, and a daughter. Let's join our hands together to greet all strong and brave women on the eve of Raksha Bandhan, which is a symbol of relation full of love and care. सुप्रभात. सम्मानीय चेयरमैन HOD कामाख्या प्रसाद दास सर, सम्मानीय अतिथिगण, मुख्य प्रबंधक निर्देशक स्मरणिका महांती मैडम एवं ओम वैलीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टिटलागढ़ से वरिष्ठ शिक्षक सरिता महापात्र मैडम तथा हमारे सेमिनार कोऑर्डिनेटर मिस मिन्नती पाणिग्राही मैम और यहाँ उपस्थित सभी छात्रा छात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वेबिनार सेशन के उपरांश पर मैं सविता आप सभी के समक्ष आज की स्थिति में महिलाएं क्यों
प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इस विषय पर हमारे विभाग HOD द्वारा तैयार किया गया लेख आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। इसी के साथ मैं एक वाक्य को लेकर शुरू करना चाहूँगी। महिलाएं सरल और मजबूत, बोल्ड और सुंदर, प्रेरक और स्वतंत्र, साहसी और दृढ़ संकल्प, शानदार और केंद्रित, उद्धार और भाव का रूप होती है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसको राजपूत द्वारा बनाया गया था, जिससे हम रक्षाबंधन के माध्यम से हम महिलाओं की समानता, उनकी साहस, उनकी सहनशीलता, उनकी स्थिति को किस तरह हम समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इस कोविड-19 की स्थिति के दौरान महिलाएं किस प्रकार वे दो पक्षों के रूप में काम करती हैं और संभालती हैं, अथवा पेशेवर और व्यक्तित्व के रूप में। आज की स्थिति में महिलाएं क्यों प्रेरणा का स्रोत होते हैं? मुझे ये कहते हुए हमेशा गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनी और विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री महिलाएं ही रही हैं, और यहाँ तक कि राजनीतिक दलों की प्रमुख और संसद के सदनों की स्पीकर भी महिलाएं ही रही हैं। उन्होंने आगे कहा है कि एक बार पुरुषों के वर्चस्व वाले क्षेत्रों पर महिलाओं का कब्जा हो गया है। पुलिस, सेना, वाणिज्य पायलट सभी पुरुष थे, लेकिन अब महिलाएं सेना में लड़ाकू पदों पर हैं, वायुसेना के विमानों को चला रही हैं, वे अंतरिक्ष में जा रही हैं और यहाँ तक कि कृत्रिम अंगों के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई भी कर रही हैं। और साथ ही महिलाओं के लिए प्रेरणा और समर्थन के लिए अन्य सफल महिलाओं की ओर देखना आम बात है, ताकि वे खुद को सर्वश्रेष्ठ बना सकें। लेकिन प्रेरक महिलाएं नेताओं, चाहे वो माताएं हो, CEO हो, प्रथम महिलाएं हो, राजनेता हो, लेखक हो या कार्यकृतक हो, लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए मार्गदर्शन, अंतर्दृष्टि और नेतृत्व के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करना चाहिए। लेकिन शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक महिला नेताओं को ऊपर उठाने की शक्ति बनाने से हमारी दुनिया और हमारी संस्कृति को केवल विविधता में वृद्धि के माध्यम से लाभ होगा। परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान उद्योग और स्थान जिसमें से कहीं भी बदलाव की आवश्यकता है को उन महिला नेताओं में अधिक सार्थक निवेश द्वारा उपकृत किया जा सकता है, जो पहले से ही दुनिया भर में युवा महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करती हैं। इसलिए हमने दुनिया भर में प्रेरणादायक महिलाओं के बारे में सुना है। वे जीवन के हर पहलू में पुरुष के बराबर हैं। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में महिलाओं के बारे में क्या है? हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी पत्नियाँ, दोस्त और यहाँ तक कि जिस महिला के साथ आपने एक सुखद मुस्कान का आदान प्रदान किया था, उस दिन लेन के नीचे हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं दिवस, यह हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जब हर कोई महिलाओं के प्रति प्रशंसा, प्यार और सम्मान दिखाता है। नारी को कहा जाता है ईश्वर की सुंदर रचना। यह सच है कि सभी महापुरुष का जन्म एक स्त्री के गर्भ से हुआ है और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक महिला से ही ली है, और इसलिए लोग अपने जीवन में महिलाओं को उचित सम्मान देते हैं। और ये लागू कथाएं आपको बताती है कि कैसे हम सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रेरक महिलाएं ही रही हैं। सबसे सरल से लेकर सबसे मजबूत तक, घरों और बच्चों की देखभाल करने वाली से लेकर पूरे देश की देखभाल करने वाली महिला तक, महिलाओं ने हमेशा अपनी बहादुरी, बलिदानी, वफादारी से सभी को प्रेरित किया है। और क्या नहीं। इस कथन पर एक बात कहना चाहूँगी, महिलाएं समाज का आधा हिस्सा हैं। महिलाओं के बिना क्रांति नहीं हो सकती, महिलाओं के बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता, महिलाओं के बिना आपके पास समानता नहीं हो सकती, महिलाओं के बिना आपके पास कुछ भी नहीं हो सकता। अधिक व्यक्तित्व स्तर पर मैं ये प्रमाणित कर सकती हूँ कि इतिहास में विभिन्न महान महिलाओं के अध्ययन और सीख ने मुझे भी आकार दिया है।
कि मैं कौन हूँ। निसंदेह उन्होंने मुझे प्रेरित किया है, जैसे कि मुझे यकीन है कि वे आपको भी करते होंगे और प्रेरित करेंगे, चाहे आप कोई भी हो। यहाँ महिलाओं के कुछ उदाहरण दी हूँ जो हमें उनकी दयालुता, साहस और दृढ़ संकल्प के कार्य से प्रेरित करते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, अरुणिमा सिन्हा, द गुलाबी गैंग, मैरी कॉम, हर्षिना कन्हेकर, अंत में हर गृहिणी माँ। जहाँ कहीं महिलाएं हैं जो अपने घरों के बाहर अपने चुने हुए क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करती हैं, वहीं कई ऐसी भी हैं जो घर पर बैठी हैं और अभी भी दुनिया की मालिक हैं। आखिर लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं, हर भारतीय माँ एक उपलब्धि है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। पेरेंटिंग एक कार्य हो सकता है। हम जानते हैं कि विश्व रूप से आज के दिन और उम्र में जब हम सभी के पास करियर, घर और परिवार होते हैं, माँ जीवन के लिए महान शिक्षक है। चाहे खाना पकाने की बात हो, अपने दाग धब्बों को साफ करने के नुस्खे या अपने मुहासों के इलाज के लिए देसी नुस्खे, वो सब कुछ जानती हैं। और हाँ, वो पहले से ही एक महान शिक्षक होने के अलावा एक आदर्श प्रबंधक है जो हमारे जीवन का प्रबंध भी कर रही है और हमारे आसपास की चीज़ों से निपटने में हमारी मदद भी कर रही है। हालांकि भारतीय माताओं के बारे में हमेशा कुछ खास होता है जो उन्हें औरों से अलग करता है। यह सिर्फ एक महान व्यक्तित्व के होने के बारे में नहीं है, बल्कि इस युग की बुद्धिमान और संभावित युवा महिलाओं के लिए बहुत सारी हस्तशिल्प, जुनून और करुणा की आवश्यकता है। तो लड़कियों, अपनी कमियों को दिखाओ और अपनी शर्तों पर अपना जीवन जियो। अंत में, दिन के अंत में यह मत भूलो कि तुम एक व्यक्ति हो, यह मत भूलो कि तुम एक माँ हो, एक बेटी हो, एक पत्नी हो। द्वारा इंद्र नूरी। धन्यवाद।